Hello everyone. So welcome back to the introduction of matrix and determinant. Now matrix and determinant are very important in mathematics based on the real life situation. Now, by using matrix and determinant, we can quickly solve many problems related to the linear equations in engineering and science and technology. Also, we can solve problems related to dynamics, equation of motion, etc. And also we can solve simultaneous equation by using matrix and determinant methods. Okay, so without further delay, let's get started. Now first हम लोग देखेंगे what is matrix. Okay, matrix क्या है? So a matrix is a what? Set of nm numbers. So n into m. So like 2 into 3. Okay, if we write 2 into 3, so it means 6 elements. So when we write nm numbers, so total number of element will be m into n, that is nm numbers. And these numbers are what? Either real or imaginary. And these numbers, what we'll do, will arrange in the form of a rectangular array. So array means what? Form. Okay, in this particular form, we'll arrange some numbers. Okay, array of numbers, where there will be m rows and n columns. And this particular arrangement is called what? A matrix. Okay, whose order is mn. So the order, about the order, I'll talk now. What is order? Now in general, matrices are denoted by capital letters. So matrix को हम लोग capital A, capital B या तो capital C इस टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे. ठीक है, जैसे कि सेट में था, सेट थ्योरी में था, कोई भी सेट हम लोग A B C ऐसे लिखते थे. So in matrix also we'll use what? Capital letters. Now what we are saying there, we have how many rows? M rows. Row matlab horizontal. So we'll write the element like this: A11, A12, dot A1 M. ठीक है. So why A11? So ये जो पहला जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट, so इसका पोजीशन देखिए, ये कहाँ पे है. ओके, और एक लाइन लिख लेते तो और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. A21, A22, dot A2M, and then in this way. So last one will be AN1, AN2. चलिए ये होगा M. हाँ, ये जो लास्ट है ये आएगा N. So this will be our N. So then in this way it is MN. Now when we see this type of numbers, no, initially it looks a little bit complicated, but if what is simple as see. Now what about this element? This element lies in the first line, no? So see how many horizontal lines are there. Some horizontal lines are there. So how many horizontal lines are there? M. And these are vertical lines. Okay, 1, 2, like this. How many vertical lines are there? N. So total number of horizontal lines equals to what? M. And vertical lines what? N. So the horizontal lines are known as what? Rows. Okay, so these are row, and when you write vertical line, these are called columns. Okay, columns. Now see this element, no, the first element lies in what? First row and first column. That's why it is 1 1. That first one is for row and second one is for what? Column. Similarly, when you write the second element, no, this element, it is A12. So 1 means first row and 2 means what? Second column. So like this we are using this particular symbol. Okay, so how many rows are there? M rows, and number of columns is N. Okay, so order of this particular matrix is M by N. So always we'll write row first and then what? Column. So how will read this? This is a M cross N matrix. Okay, let us take another example with numbers. 1, 2, 3, suppose 4, 5 and 6. Now see in this particular matrix, so this whole arrangement, no, this whole arrangement is called matrix. Okay, this total arrangement इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Matrix. So matrix में क्या रहता है? Row and what? Column. So here how many rows? 1
and 2. Horizontal line, how many horizontal lines? 2 horizontal lines, so 2. And then how many vertical lines? 1, 2, and then what? 3. So 3. So this is the order of the matrix. So what is the order of the matrix B? It's 2 by 3. ठीक है. So ऐसे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं. ये जो बड़ा मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, A सफिक्स आई जे. ओके. सो जो I है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 2 अप टू M. और जो J है वो होगा 1 2 अप टू N. ठीक है. सो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. सो आप लोग किसी बुक में देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ऐसे A सफिक्स आई जे भी लिख सकते हैं. सो ये डिपेंड करेगा. जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे A सफिक्स आई जे, सो यहाँ पे I कितना होगा? 2 रो था, सो 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 एंड व्हाट? 3. ठीक है. सो दिस इज मैट्रिक्स. सो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement of numbers. Now let us discuss what is rectangular arrangement. So what is rectangular arrangement? जैसे कि मान लीजिए we are writing 1 2 and 3 and then suppose 4 5 6. Now see, if we draw the outside, no, if we draw the outside boundary, you see it looks like a rectangle. So we are arranging some numbers in a rectangular form or rectangular array. So this whole system is a what? Matrix. Now we'll discuss types of matrices. There are varieties of types of matrices and each and every type is important. Okay. So types of matrices. Types of matrices. So what is the difference between matrix and matrices? So matrix is a singular number, and if there are more than one matrix, then we'll say that matrices. So पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स. ओके, रो मैट्रिक्स. ठीक है, रो मैट्रिक्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल डेफिनेशन हियर, अदरवाइज द वीडियो विल बी सो लॉन्ग. सो द लैंग्वेज पार्ट, whenever I say, you can write it in some notebook or from any book, you can write the definitions. Okay. So row matrix means what? There will be only one row. Suppose 1 2 and 3. It is not hard and fast rule that we have to write 3 element or 4 element. So it can be any number of element. Now see, in this particular matrix, no, just observe it very carefully. We are writing only one row. Only one row. Now if I ask you if there is any column, just think a little bit. Row is number only one. So सिर्फ एक ही row है. तो यहाँ पे क्या column है? Is there any column? So yes, there are columns also. So how many columns? 1 2 and then 3. Yeah, in each column we have only one element. हर एक column में सिर्फ एक ही element है, लेकिन ये column है. ठीक है. So how many columns? 3. So ये जो matrix है इसका order कितना हो गया? 1 by 3. तो इसे row matrix क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक ही row है. If there is only one row, then this is called row matrix. Similarly, column matrix. Column matrix. So same होगा. सेम. ठीक है. सपोज मान लीजिए ऐसा है 1 2 3 एंड देन व्हाट? 4. सो हाउ मेनी कॉलम्स? ओनली वन कॉलम. सो कॉलम कितना है? एक. नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, इज देयर एनी रो? यस, देयर आर 4 rows. 1 2 3 एंड देन व्हाट? 4. सो इन ईच एंड एवरी रो वी हैव ओनली वन एलिमेंट. सो हर एक रो में एक एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे रो है. सो इसका ऑर्डर कितना होगा? 4 by 1. So why this is column matrix? Because in this particular matrix we have only one column. सिर्फ एक ही column है. ठीक है. Next come square matrix. Square matrix. So what is square matrix? तो square मतलब क्या है? हमें मालूम है square मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे तो लेंथ और ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. सो वी आर एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रो एंड कॉलम. So in square matrix, number of row must be equals to number of column. कैसे? Suppose A, B, C and D. Now if we look closely, how many rows are there? 1 2. ठीक है. And how many columns? 2 columns. So यहाँ पे row भी 2 है and column भी 2 है. So how many rows? 2. And how many columns? 2. So since number of row is equal to number of column, so this is a what? This is a square matrix. So similarly,
अगर हम लोग को 3x3 मैट्रिक्स लिखना है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहाँ पे कितना रो है 3, कॉलम कितना है 3, सो दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सपोज वी वांट टू राइट ओनली वन एलिमेंट, सो यहाँ पे कितना है 1 रो 1 कॉलम, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. ठीक है, सिंपल है ना. ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा टाइप में जाएंगे अभी. Okay, now we'll discuss about diagonal matrix. So what is diagonal matrix? So see, diagonal matrix मतलब वहाँ पे diagonal रहेगा. ठीक है, diagonal matrix रहेगा. So पहला जो कंडीशन है diagonal matrix के लिए, तो उसको स्क्वायर होना पड़ेगा. ठीक है, diagonal matrix. Diagonal matrix. So in diagonal matrix, the first condition is it should be a square matrix. ओके अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, या एक रेक्टेंगल फॉर्म में, देन यू कैनॉट से इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. सो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे होना ही पड़ेगा. ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. इट शुड बी व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स. सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9. ठीक है, सो अभी देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3/3. नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव टू डायगोनल. ठीक है, दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज अनदर डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल. Now see, one diagonal is starting from left hand side. I am talking about this one. One diagonal is starting from our left side and another diagonal is starting from our what, right hand side. So the diagonal which start from left hand side, that means we are talking about this diagonal. इस diagonal के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, प्रिंसिपल डायगोनल. सो डेफिनेशन क्या है? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? सी, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल. आप लोग ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इफ ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरो. सो यहाँ पे हम लोग और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं. सो कैपिटल ए को आप लोग ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो डायगोनल रहेगा, लेकिन ये छोड़ के बाकी हम लोग वहाँ पे जितना एलिमेंट लिखे थे ना वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरो. नाउ सी, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक है, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल. ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल था, दिस इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल. सो एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरो. सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल यहाँ पे दो है. ठीक है, एक तो प्रिंसिपल डायगोनल है और एक डायगोनल है जो राइट साइड से स्टार्ट होगा. सो राइट साइड वाला डायगोनल यहाँ पे कॉन्सर्न नहीं है. सो विल जस्ट टॉक अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, सो इफ एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, all the other elements are zero, then this particular matrix is called what, diagonal matrix. Now there is one more question. Suppose 1 0 0 then 0 5 0 0 0 9. ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको भी जीरो बना देता हूँ. नॉट जस्ट थिंक नाउ इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट. Okay, now this is a diagonal matrix or not. So what comes to your mind? थोड़ा सोचिए. Okay, now see the definition. What is the definition? Accept the principal diagonal. So accept the principal diagonal. पहले हमें देखना होगा बाकी एलिमेंट जीरो है कि नहीं. Yes, because accept the principal diagonal, all the other elements are zero. And in the definition, it is not mentioned that principal diagonal, all the elements of the principal diagonal are zero. ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है जो प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो नहीं आ सकता है. सो यहाँ पे एक जीरो हो सकता है, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल्सो ए क्या, डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, इफ वी मेक 5 ऑल्सो जीरो, 5 को भी अगर हम लोग जीरो बनाएंगे देन ऑल्सो दिस इज ए व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स. या बट अगर आप लोग लास्ट का जो 9 है ना इसको भी अगर हम लोग जीरो बना देते हैं, नाउ दिस इज नल मैट्रिक्स. सारा एलिमेंट जीरो हो गया, ये क्या है, नल मैट्रिक्स. हम लोग थोड़ा देर में उसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज null matrix. Now if you write all the elements zero, it will become what, null matrix. So I hope diagonal matrix is clear to all of you. So what is diagonal matrix? Accept the principal diagonal,
other elements what should be 0. Okay, so in the principal diagonal there may be some zeros but not all. Okay, सब जीरो नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा. नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट है, इसे डायगोनल होना पड़ेगा, शुड बी डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या मिला था, स्क्वायर होना पड़ेगा. सो इनडायरेक्टली हमें मालूम चल रहा है जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो फर्स्ट इसे डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है. ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम. देखिए 0 0 अल्फा, ठीक है. सो अल्फा इज एनी नंबर. तो यहाँ पे देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एक्सेप्ट द डायगोनल बाकी सारा एलिमेंट 0 है, बट ऑल द डायगोनल्स, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर व्हाट, सेम. सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स. इन प्लेस ऑफ अल्फा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज 5 0 0 0 5 0. अगर 2/2 मैट्रिक्स आप लोग यहाँ पे लेंगे तो सपोज 5 0 0 5. सो दिस इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज एक्सेप्ट द डायगोनल अदर एलिमेंट्स आर 0 एंड व्हाट डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम. ओके, नेक्स्ट आएगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ओके, सो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग जनरली आई से डिनोट करेंगे. तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा ना वो सारा 1 आएगा, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 एंड व्हाट 0 0 1. ठीक है, सो दिस इज डायगोनल, सॉरी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. तो यहाँ पे देखिए सारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है क्या है, 1 है. तो सिमिलरली अगर हम लोग 2/2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1. So you can write 4/4, 5/5, no problem. Okay, but for understanding up to 3/3, 2/2 is all right. So कहीं कहीं बुक में हम लोग इसको, जैसे कि इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है ना, 3 रो 3 कॉलम. सो इसको I3 भी लिखा जाता है, I3. और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, I2. ठीक है, I2 मतलब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2. ऑर्डर इज 2 और यू कैन से 2/2. सो स्केलर मैट्रिक्स इज क्लियर, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. In identity matrix, all the diagonal elements are what, 1. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. ओके, नेक्स्ट विल बी आवर नल मैट्रिक्स. ठीक है, नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स. सो व्हाट इज नल मैट्रिक्स. यहाँ पे स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं है, इट शुड बी ऑफ एनी ऑर्डर. जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या होगा, स्क्वायर ही होना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे नल मैट्रिक्स मतलब इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर. सपोज मान लीजिए 0 0 0 0 0 0. सो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो एंड 3 कॉलम. सो इसे 2/3 मैट्रिक्स. सो जनरली हम लोग नल मैट्रिक्स को बिग ओ से मतलब डिनोट करेंगे, ऐसे बिग 0. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो बिग 0. सो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2/3 है. सो इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0. ठीक है, तो ये एक दूसरा नल मैट्रिक्स है. सो बहुत ही सिंपल है, अंदर में जितना भी एलिमेंट है सारा क्या होगा, 0 हो जाएगा. और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पे 2/3 है ना, 2 × 3. सो 2 × 3 मतलब 6. सो इन साइड में 6 एलिमेंट होगा. देखिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जो ऑर्डर है उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर में कितने हैं उसे मालूम, मतलब वो हमें मालूम चल जाएगा. एंड द फर्स्ट इज फॉर रो एंड द सेकेंड इज फॉर व्हाट, कॉलम. ऑलवेज द फर्स्ट इज रो एंड द सेकेंड इज व्हाट, कॉलम. Okay, next come upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Okay, upper triangular matrix. So फिर से एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे. So in upper triangular matrix again it is a square matrix. ठीक है, 0 4 5 0 0 6. Okay, now see, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए. Now if I okay, so what is the definition, below the principal diagonal all the elements should be 0. तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है. सो इसका जो नीचे जो 3 एलिमेंट है वो क्या है, 0 है. Now if you draw this part then you will see we'll get a triangle na, and the triangle forms in the upper part. So that's why it is called what, upper triangular matrix. So below principal diagonal whatever elements you will get, all the elements are 0.
Now see, it is not mandatory that all the elements inside the upper triangular must be what, non-zero. तो यहाँ पे जीरो हो सकता है. Suppose इसको आप लोग जीरो बना दीजिए, इसको भी जीरो बना दीजिए, no problem. But the main thing is that below the principal diagonal, all the elements should be what, zero. Next come lower triangular matrix. So what is lower triangular matrix? Same concept. Suppose 1 0 0, 2 3 0, 4 5, and then what, 6. Now see, here the triangle forms in the lower side. Okay, so that's why this particular matrix is called what, lower triangular matrix. So again, what is the definition? All the elements above the principal diagonal are what, should be zero. So नीचे जो lower triangular है, so उसमें जीरो आ सकता है, 2 3 जीरो आ सकते हैं, no problem. Okay, या तो minimum अगर एक नॉन जीरो है, बाकी सारा जीरो है, then also you can say that this is a lower triangular matrix. Okay, so if in some book you see the triangular matrix, so what is triangular matrix? So triangular matrix का अलग से कोई definition नहीं है. Triangular matrix means either it is upper triangular or it is what, lower triangular. Okay, so is it clear? Either it is upper triangular or it is lower triangular. Okay, now let us come to another definition, which is equal matrix. Equal matrix. So let us take two matrices. Suppose A, B, C, D, and then B is another matrix. Suppose X, Y, Z, and W. Okay. So when we say that two matrices are equal, the first condition is order should be same. Okay, order should be same. तो यहाँ पे जो order है वो क्या है, 2 by 2. इसका जो order है इसमें क्या है, 2 by 2. So order should be same. So it is not like that it should be what, square matrix. It can be of any order, but order should be same. And then the second condition is corresponding elements are equal. A should be equal to what, X, B should be equals to Y, C should be equals to Z, and D should be equals to what, W. Okay, so A equals to B if order is same, first condition, and then A is equal to X, B equals to Y, C equal to Z, and what, D equals to W. Okay, so this is the definition of equal matrix. So this is also very simple. Now transpose of a matrix. Transpose of a matrix. So what is transpose of a matrix? Let us take one example. Okay, so what is the order? 2 by 3. Now transpose of a matrix is denoted by A to the power capital T, or you can write A to the power small t, or you can write A dash. So transpose means in capital A we have 2 row and 3 column, right? 2 row and 3 column. So transpose of the matrix A is the new matrix which we get after interchanging rows and columns. So what is the meaning of interchanging rows and columns? आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रो है ना, ये A dash में आके column हो जाएगा. So what is the first row there? 1 2 3. Now that first row will write in column. Okay, first row now becomes first column, और जो second row था that will become second column. 4 5 6. ठीक है. Now what is the order? अभी देखिए order change हो गया. ठीक है, order change हो गया. So this is the transpose of the original matrix. ठीक है. So it's very simple. अगर एक 2 by 2 matrix है, A B C C D, this is 2 by 2. Now how to write B transpose? How will write B transpose? So first row will come in first column, second row will come in second column. So here the order is same. तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज. ओके, बोथ साइड एरो देना होता है, इंटरचेंज्ड. Okay, now there are two types of transpose matrix. One is called symmetric matrix, another one is called what, skew symmetric matrix. So let us discuss that. Symmetric matrix. Symmetric matrix. Okay, so what is symmetric matrix? If
A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, दोनों अगर सेम है, सपोज ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर सेम है, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी व्हाट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें एक चीज़ मतलब पता चल रहा है, ऑर्डर शुड बी सेम, क्योंकि अगर आप लोग मतलब ट्रांसपोज लेंगे, अगर ऑर्डर चेंज हो गया सो मैट्रिक्स सेम नहीं रहेगा। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, सपोज कैपिटल A इक्वल्स टू A B C H G F and then H G F. Okay, so this is a 3 by 3 matrix. Now let us take the transpose. So if we take the transpose, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, this is the first row. Now this first row I am going to write in first column A H G. Okay, the first row I am writing in first column. Now second row H B F. So H B F. Okay, now third row is G F C, G F C. Now interestingly, you see, it's very interesting, we change all the rows and columns but it looks same. So this is an example of what, transpose matrix. So how to remember this? You see, you just write down the diagonal ABC and then here clockwise HGF and here anti-clockwise HGF, and then if you take the transpose, it remains exactly what, same. So here A equals to A transpose, that means the matrix is what, symmetric matrix. Okay, now what is skew symmetric? Skew or anti-symmetric. Okay, anti-symmetric. Now here A transpose is equal to minus A, so there will be a difference in negative sign. Everything will be same but a difference in negative sign. Okay, so let us take one example, suppose 0A minus A 0. So I am taking a 2 by 2 matrix. So now let us take transpose. So this is the first row, this first row I am going to write in first column. So पहला जो रो है उसको आप लोग कॉलम में लिखिए, देन जो सेकेंड रो है उसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखेंगे. नाउ व्हाट आर द चेंजेस? Changes in sign, 0. Okay, now from both the term or all from inside we have 4 terms, so from all the term if we take minus common, then it is 0, minus A will become A, और यहाँ पे जो A था वो क्या हो जाएगा, minus A and then 0, because 0 positive 0 negative 0 is same. So you see, this is nothing but minus A. So this type of matrices are called what, skew or anti-symmetric matrix. So इसको आप लोगों को ध्यान देना, यहाँ पे जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल को हमेशा हमें 0 लिखना होगा, क्योंकि आप लोग जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे भी अब हम लोग देखा था, रो कॉलम इंटरचेंज करने से डायगोनल का जो पोजीशन है चेंज नहीं होता है, क्योंकि रो कॉलम इंटरचेंज मतलब क्या, सपोज मान लीजिए एक 1 2 एक एलिमेंट है, सो इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे इसका पोजीशन हो जाएगा 2 1, लेकिन जो डायगोनल का एलिमेंट होता है ना A11, इसको इंटरचेंज करने से भी A11 ही रहेगा, सो इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है. सो इसलिए डायगोनल को हमें 0 0 लेना है, क्योंकि ये इंटरचेंज नहीं होगा. सो 0 एंड माइनस 0 इज सेम, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे 2, तो माइनस 2 नहीं आएगा, सो स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं आएगा. ओके, सो इज इट क्लियर? सो स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोग क्या करना है, डायगोनल को 0 लीजिए, और सपोज यहाँ पे ये एलिमेंट नेगेटिव में है तो इसका जो अपोजिट एलिमेंट आएगा उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. सो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, varieties of matrices. Okay, now there are operations on matrices. Operation on matrices. So actually there are four operations. First is scalar multiplication. Scalar multiplication with a matrix. With a matrix. So suppose this is one matrix A B C D, it can be of any order. तो scalar multiplication मतलब suppose मान लीजिए we want to multiply this matrix with a number, then what to do, we have to multiply each and every element inside the matrix by these 2, so it will become twice A, twice B, twice C and twice D. सबको मल्टीप्लाई करना है. अगर अंदर में 6 एलिमेंट है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज ये जो नंबर है एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, देन कम्स एडिशन.
addition and subtraction. Addition and subtraction. So two matrices are said to be conformable or possible for addition and subtraction if they are of same order. Suppose इसका order कितना है 2 by 3. So if we take another matrix, it should be of same order. Okay, otherwise you cannot multiply. Oh, sorry, we cannot add. So what is a plus b? So पहला तो है order same होना पड़ेगा. So order same है, so we can add it. So इसका जो first element है ना, ये first element इसका first element से add करना पड़ेगा. So 1 plus 2 कितना होगा 3. नेक्स्ट जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा. सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यू हैव टू ऐड. सो हाउ मच इट इज़ 1. देन फिर से 2 के साथ 0 को ऐड करना है 2. देन 3 plus 4 7. 0 plus -2 इट्स -2 एंड 5 plus 1 कितना 6. और इसका ऑर्डर सेम रहेगा. सो दिस इज एडिशन विच इज वेरी सिंपल. देन माइनस भी उसी तरह से आप लोग करेंगे 1 -2 -1 -1 -2 कितना होगा -3. 2 - 0 इज 2. 3 - 4 -1, 0 - 2 is 2, 5 - 1 is 4. So addition and subtraction is very, very easy. There is one more operation which is called multiplication. Okay, so मैंने बोला था 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन. तो यहाँ पे 2 और 3 है addition and subtraction, and this is number 4. So for multiplication I make a separate video. You kindly go and watch that particular video very carefully, because multiplication is the backbone of matrix and determinant. It's very, very important. So if I do multiplication here, then the video will be is a little bit more long. So that's why I make a separate video on multiplication. आप लोग वहाँ पे जाइए, multiplication को ध्यान से देखिए कैसे करता है, और एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कीजिए. एंड देन उसके बाद आप लोगों को मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट जो है वो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा. Okay, now let us come to the last part of this introduction to matrix and determinant, which is determinant. Now there is a vast difference between matrix and determinant. ये देखने में सेम जैसा लगता है. सो यहाँ पे पहला चीज़ देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. सो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आएगा. सो मैट्रिक्स क्या था, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसमें कुछ नंबर हम लोग रेक्टेंगल शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद एन एक्सप्रेशन और ए नंबर. सो यहाँ पे जो देखने में मैट्रिक्स जैसा लगेगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो एक नंबर या तो एक एक्सप्रेशन आएगा. सो दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट. और सपोज कब मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, कैपिटल है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे मॉडुलस एन में लिखेंगे, मॉडुलस है. पर इसे हमें मॉडुलस ए नहीं पढ़ना है. व्हाट हाउ विल रीड दिस, मॉड ए. डिटर्मिनेंट है, सॉरी, व्हाट डिटर्मिनेंट है. और यू कैन राइट DTA. Okay, now let us take an example. What is we are saying that every square matrix associated with a number, उसका मतलब क्या है. Suppose this is a matrix A, B, C and D. So determinant of A. Now when you write determinant, no, now we cannot use this matrix symbol. On the right side also we have to use these parallel lines. Okay, now how to break it. This into this, पहले ऐसा आएगा AD, A into D माइनस, पहले आप लोग माइनस दे लीजिए, माइनस, देन दिस इंटू दिस AD माइनस CB. वेरी सिंपल. सो ये 2/2 था, ठीक है. सो इन द सेम वे वी कैन ब्रेक 3/3 एंड 4/4. सो अगेन those two expansion I am not including here. Again it will be long, the video will be long, so you'll get it in the description box under matrix and determinant. Okay, so that's why I request all of you kindly subscribe the channel and hit the bell icon, so that whatever video I upload you'll get the notification immediately. Okay, now let us take one example. Suppose B एक matrix है, वहाँ पे 2 3 -2 and 1 है. So how to break the determinant? 2 3 -2 and 1, ठीक है. So what I said, first we will multiply this into this, 2 into 1, minus, first give minus and then this into this, -2 into 3. So 2 into 1 is 2 and here minus plus, it is 6. So how much it is? 8. So determinant is very, very simple. Okay, then there are two more things, singular and non
singular matrices और मैट्रिक्स, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज मान लीजिए किसी एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालने के बाद वो जीरो आ गया, सपोज इट इज जीरो, देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे कि ऊपर का जो एग्जांपल है वहाँ पे 8 है, सो वो नॉन जीरो है ना, वैल्यू क्या है नॉन जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, then it is what? Non-singular. Okay, so whatever is inside matrix and determinant, everything I have explained here. Now the detailed portion, so I'll make series of videos or series of lectures, so kindly you watch step by step. After introduction you'll get matrix multiplication, then minor and cofactors. So like this you just do each and every video, so that after finishing the whole series you will be master in matrix and determinant. Okay, so I hope you like the video, and if you find my videos helpful, then kindly share with your friends also. Thank you very much for watching.